उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skill fantasy लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ગુજરાતની અંદર અવારનવાર અન્ય રાજ્યમાંથી દારૂ આવતો હોય, બસ કે ટ્રક દ્વારા આ દારૂની સ્મગલિંગ થતી હોય અને પોલીસ તેનો નાશ કરતી હોય તેવા અનેક સમાચારોનો વિડીયો આપણે જોતા હોઈએ છીએ। પરંતુ આજે એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે કે જ્યાં ગુજરાત ATS દ્વારા એક બસ ડ્રાઈવર કે જે બાતમીના આધારે પોલીસ વોચ ગોઠવે છે અને બસ ડ્રાઈવરની અટકાયત કરે છે। આ બસ ડ્રાઈવર પાસેથી દારૂ તો નહીં પરંતુ 5 બંદૂક મળે છે, જે બાદ તેની તપાસ કરતા તેણે રાજ્યના અનેક શહેરોમાં આ ગન સપ્લાય કરી હોય તેવી જાણ મળે છે। કોણ હતો આ ડ્રાઈવર, કઈ હતી બસ અને શું કહ્યું ATSએ, જુઓ આજની આ ક્રાઇમ સ્ટોરીમાં। નમસ્કાર, ગુજરાત તક સાથે હું છું કશ્યપ। શું ગુજરાતમાં શાંતિ દોડવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો હતો? ગુજરાત ATSએ 25 પિસ્તોલ ઝડપી। રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને અમરેલી જિલ્લામાંથી ઝડપાઈ બંદૂકો। ગુજરાત રાજ્ય આમ તો શાંતિપ્રિય છે, પરંતુ તેની સામે દિવસે ને દિવસે અનેક ગુનાઓ અને ગુનેગારો બેફામ બનતા જઈ રહ્યા છે। તેવામાં આવા ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ પર ગુજરાત ATS પોતાની ચાપતી નજર રાખી રહ્યું છે। ત્યારે ગુજરાત ATSના અધિકારીઓને સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આ પ્રકારના ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમને ડામવા માટે એલર્ટ રહે। આ વચ્ચે ATSના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક હર્ષ ઉપાધ્યાયને તેમના બાતમીદારો દ્વારા એક આર્મ સ્મગલિંગની બાતમી મળી હતી। બાતમી પ્રમાણે મધ્યપ્રદેશના જાંબઆનો શિવમ નામનો માણસ પોતાના કબજામાં ગેરકાયદેસર પિસ્તોલો તથા કારતૂસોનો જથ્થો રાખીને અમદાવાદના નારોલ બ્રિજના પૂર્વ તરફથી ફૂટપાથ પરથી ચોટીલા મનોજ ચૌહાણ નામના ઈસમને ડિલિવરી કરવા જઈ રહ્યો હતો। જે બાદ ગુજરાત પોલીસ અને ATS દ્વારા એક વોચ ગોઠવવામાં આવ્યું હતું। નારોલ પોલીસ પર ATS અધિકારીઓ વોચ ગોઠવ્યા અને 2 ઈસમો પર શક જતા તેઓને ત્યાં જ કોર્ડન કરીને તેમની પાસે રહેલી થેલી ઝૂંટવી લીધી હતી। જે બાદ તેમાંથી 5 પિસ્તોલ 20 કારતૂસ મળી આવ્યા હતા। પોલીસે આ બંને ઈસમો વિરુદ્ધ હાલ તો ગુનો દાખલ કર્યો છે। गुजरात ATS के पास एक क्रेडिबल इनपुट आया था कि शिवम डामोर करके जो लड़का है वो ट्रैवल जो बसेस होती हैं उसके बिज़नेस में इन्वॉल्व है। वो खुद MP के जाब्वा से वेपन प्रोक्योर करके गुजरात के कई डिस्ट्रिक्ट्स में वो सप्लाई कर रहा है। और क्योंकि वो इलेक्शन का माहौल था इसलिए वो बल्क में क्वांटिटी नहीं ला रहा था, पर ही वॉज केयरफुल कि एक दो करके वो सप्लाई कंटिन्यूस उसने चालू रखा था पिछले 3 मंथ से। इसी इनपुट पर ATS के सीनियर ऑफिसर्स को ब्रीफ करते हुए उनकी ओर से डायरेक्शंस मिले कि इसमें लीगल एक्शन इनिशिएट किया जाए। और इसके बिहाफ पर हमने PSI VR जाडेजा एंड विजय भरवाड़ को जो जगह थी जहाँ ये हमारे पास इनपुट था कि ये डिलीवरी होने वाला है, नारोल अहमदाबाद सिटी का नारोल एरिया, वहाँ हमने उनको डिप्लॉय किया। उनकी टीम के साथ जब वो वॉच में थे तब ये जो सस्पेक्ट्स थे वो मिल गए। उनके जब मिलने पर उनके जो पोजेशन में जो बैकपैक था उसके सर्च में उसी टाइम पर हमें 5 पिस्टल और 20 लाइव कार्टेज हमको वहीं से मिले थे, जिसके सब्सिक्वेंटली जिस पर हमने फिर आर्म्स एक्ट का क्राइम रजिस्टर किया। गुजरात ATS पर लाकर उनको कल थरो और डीप इंट्रोगेशन किया गया। उनके थरो और डीप इंट्रोगेशन में पता चला कि शिवम ने और 20 वेपन्स कन्फेस किए पिछले 3 महीनों में डिलीवर किए हुए गुजरात में। इसी कन्फेशन के बेसिस पे हमने एक प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए PSI VR जाडेजा, विजय भरवाड़ और RR गच्चर के नेतृत्व में 3 टीम्स हमने गुजरात के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्पैच की, सुरेंद्रनगर, राजकोट सिटी और अमरेली। और वहाँ से और 4 लोगों को 20 वेपन्स और 70 लाइव एम्यूनिशन के साथ हमने वहाँ से अरेस्ट किया है। उनको आज सुबह यहाँ गुजरात ATS लाया गया है और उनके अगेंस्ट में उनको अरेस्ट करके उनके अगेंस्ट में भी लीगल एक्शन इनिशिएट किया गया। शिवम बेसिकली इसको मॉनेटरी गेन के लिए 30 या 35,000 से डिपेंडिंग कि कैसा वेपन है MP से प्रोक्योर करता था और गुजरात में अराउंड 50 to 55,000 वो आगे बंदों को बेचता था। ये जो बंदे हैं उनका मेन एम था कि ये वेपन जो आते हैं 4 या 5 का एक बार उनके पास हो जाए, फिर उसको वो एक करके जिन की डिमांड है उनको वो अपना कमीशन ऐड करके 70-75,000 के बेसिस पे बेचे। अभी तक का जो पर्पस इसमें सामने बाहर आया है वो इन सप्लाई चेन का मॉनेटरी गेन का ही है।
बिकॉज इलेक्शन का टाइम था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू है, हर एक जगह पर पुलिस का चेकिंग SOGs एंड LCBs एक्टिव है। इसी तौर पर ये ट्रैवल्स में सिर्फ एक एट अ टाइम 1, 2, 3 मतलब बहुत बड़ा बल्क क्वांटिटी नहीं लाता था, इसीलिए वो इतना केयरफुल रहता था और खुद वो भी ट्रैवल्स में ही लाता था, पैसेंजर्स के सामान में रखकर या अपने सामान जो है उसमें रखकर कि पोजेशन एस्टैब्लिश ना हो पाए। वो पिछले 3 साल से जाबवा से लेकर जाम खंबाड़िया जो द्वारका में पड़ता है वहाँ वो बस का ड्राइवर है। वो कई लोगों की बस ट्रैवल्स जो होती हैं वो ड्राइव करके यहाँ लाता है। ये उसका मेन प्रोफेशन था, इसी वजह से वो गुजरात में बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में भी था और उसका प्रोक्योरमेंट जो होता था वो मनावर है, सेंधवा है, कुक्सी है, ये जो MP के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से जो इलीगल वेपन्स ये वहाँ से वो प्रोक्योर करता था। गुजरात ATS जो अनऑर्गेनाइज क्राइम और ये अनऑर्गेनाइज वे में जो इलीगल वेपन स्मगलिंग चल रहा है उसके अगेंस्ट में पहले से बहुत सीरियस है। इसी एक्शन को लेते हुए हमने विदिन 24 आवर्स 25 वेपन्स इनके पास से सीज किए हुए हैं। इनका फर्दर रिमांड सभी का लिया जाएगा। फर्दर रिमांड के दौरान ये पिछले क्योंकि 3 साल से आ रहा है तो पिछले 3 साल से इसने कितने लोगों को टच किया हुआ है और कितने लोग इसमें कनेक्टेड है, ये पूरा लिंक इसमें एक्सपोज किया जाएगा। આરોપીઓની પૂછપરછ કરતા શિવમ નામનો યુવક છેલ્લા 2 વર્ષથી ત્રીજા દિવસે મધ્યપ્રદેશથી જામખંભાળિયા વિવિધ ટ્રાવેલ્સમાં આવન જવન કરતો હતો અને રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં જે લોકો હથિયાર જોઈએ તેને તે કમિશનના આધારે હથિયાર લાવી દે તેવી ખાતરી આપતો હતો અને બાદમાં તે પિસ્તોલ અને કારતૂસ સપ્લાય કરતો। વધુમાં આરોપીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે છેલ્લા 3 મહિનામાં અલગ અલગ લોકોને હથિયાર સપ્લાય કર્યા છે, જે બાદ અધિકારીઓ દ્વારા રાજ્યની વિવિધ જગ્યા પર તપાસ કરતા રાજકોટ, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી વધુ 20 પિસ્તલ અને 70 રાઉન્ડ કારતૂસનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો અને તેની સાથે ATS દ્વારા અન્ય 4 આરોપીઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે। અમદાવાદથી અતુલ તિવારીનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।